Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. We have noticed that how we suffer. The main problem of our suffering is not knowing our own self, and that is Atma. Acharya has given a lot of examples to make us known, because not knowing is the problem. What he told, that our Atma is as if covered by five shades. How is it? Like a water body is covered with the green moss. When we, uh, any unknown person, when walks along the field and doesn't know that there was a water body or pond, and if the pond is covered with the moss, that person, if he steps into, he can be merged. The same water body contains good water. If just remove that moss, shuddham, swachham, the pure, clean, transparent, sweet water will come out, which can quench our thirst. Today, we will see yesterday we have seen 150. 150 was the Drishtanta. Today we will see Darshtanta. Panchanamapi koshanam apavade vivatvayam shuddhaha. Panchanamapi koshanam apavade vivatyayam shuddhaha. Nityanandaikarasah pratyak rupaha parasvayam jyotihi. Nityanandaikarasah pratyak rupaha parasvayam jyotihi. Panchanam api koshanam apavade vivatyayam shuddhaha. Nityanandaikarasah pratyak rupaha paraha swayam jyotihi. Panchanam apikoshanam. ये जो पांच पंचकोश है, ये पंचकोश का ही अपवादे, अपवाद मतलब निंदा नहीं। संस्कृत में, संस्कृत ग्रामर पोर्शन में अपवाद की मतलब होता है कुछ स्थिर करना,
मतलब विवेक बुद्धि के द्वारा ये आत्मा नहीं, ये आत्मा, ये आत्मा नहीं, इस विचार के द्वारा जब ये निश्चित होता है कि कौन सी आत्मा है, ये धारणा में स्थिर होना ही अपवाद है। अयम, अयम मीन्स अपने अंदर की आत्मा, शुद्ध, प्योर, नित्यानंदैक रस मीन्स सदानंद स्वरूप, प्रत्यक रूप, साक्षी स्वरूप, प्रत्यक and para. We know two words. Pratyak means Sakshi Swarupa. Then Paraha. Paraha is Shrestha. Swayam Jyoti. Swaprakash Swabhava. Self-effulgent. Vibhati. प्रकाशित होता है। जब विवेक और विचार के द्वारा ये पंचकोश का एक भी आत्मा नहीं है, ना तो ये शरीर आत्मा है, ना तो ये मन आत्मा है, मतलब मनोमय कोश, न नहीं तो बुद्धि या विज्ञानमय कोश आत्मा है, और नहीं तो आनंदमय कोश भी आत्मा है। आत्मा is absolutely different from others when we can know it firmly and try to realize Atma inside, then we can see that Atma is effulging, Swaprakasa. So it is the Darshranta, when all five shades have been negated, the self is apprehended as being the essence of everlasting bliss, as the indwelling self-effulgent supreme spirit. So when I, the conscious entity, withdraw from them all, the subject illumines itself, since consciousness is self-effulgent. This consciousness is nitya, eternal. Eternal is that which is not conditioned by the past, present, and future. Trikale tishtati iti sat. Tishtati here always present. There is no concept of time in Atma, because the concept of time is in the mind only. It's not the Atma Dharma. Like here in this earth, we have the concept of day and night. But from the standpoint of the sun, there is no night. There is only day. So in Atma also, there is no concept of time.
The concept of time within us, it's the mental factor. Clear? So, when there is no concept of time means trikale tishtati. Trikale tishtati means always present, ever present. Time is a concept of the mind, and hence this bliss is an experience transcending the mind. Also, it is of one essence, ekarasa, changeless, uncontaminated, and eternal. Time is the gap between two events. Time is the gap between two events. So, from the standpoint of Atma, it's not there. So, Atman is realized subjectively and deep within the heart and not objectively as something existing somewhere outside. So, here's some point I will tell. See, Pratyak and Para. That Para means all the external sciences. Samaj Vigyan, Dharma Vigyan, Rashtra Vigyan, even Chikitsa Vigyan. What is their periphery? They deals with the Indriya Grahya Vastu. But Pratyak means that Atma Vigyan is only discussing Atindriya Vishaya, where there is no जिसमें इंद्रिय की राजत्व खत्म हो जाता है, वहां से धर्म जगत की सूचना होता है. नॉट द रिलीजियस लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है. आत्मानात्म विवेक कर्तव्यः बंध विमुक्तये विदुषा तेनैवानन्दि भवति स्वम् विज्ञाय सच्चिदानन्दम्. आत्मानात्म विवेक कर्तव्य बन्धमुक्तये विदुषा तेनैवानन्दी भवति स्वम् विज्ञाय सच्चिदानन्दम्. The wise man should discriminate between the self and not self in order to remove the bondage. Only then he does know or he knows his own self to be absolute existence, knowledge, bliss. Only then he becomes happy. What does it mean? I will
go word for word. Vidusha. I will come into that point. What is Vidusha? Vidusha is Tritya, by someone. Who is that someone? Who is Vicharashil Vyakti. He is Vidusha, who is having the faculty of discrimination. Bandha muktaye, बंधन से मुक्ति लाभ के लिए आत्मा अनात्मा विवेक। कौन सी विचार? ना आत्मा कौन सी है, अनात्मा कौन सी है? ये कर्तव्य है, करणीय है. इट इज द ड्यूटी. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ अ विदुषा. इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज विचारवान व्यक्ति, बुद्धिमान, व्हाट इज योर कर्तव्य? आपके कर्तव्य क्या है? ना ऑलवेज विचार which is atma and which is anatma. When we will be merged in jagatik ananda, forgetting the Bhagavan and everything else, suddenly it should click. Is it atma or anatma? That vichar is verily required when you are down. That why I am mourned, why I am sad, why I am sorrow. I'm sorrow because of some particular event or vastu. Is it Atma or Anatma? Is it really me or not? Because that vichara makes us happy. तेना एव, उस विचार के द्वारा ही स्वम, खुद को, सच्चिद आनंदम, सच्चिदानंद ब्रह्म, विज्ञाय, जानकर, आनंदी भवती, वही विदुषा परमानंद को लाभ करते हैं. विवेक चूड़ामणि की अगर आपको याद है तो 2 नंबर का जो श्लोक है, जंतुनाम नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म पारगता विद्वत्वम अस्मात् परम. There another thing was atmanatma vivechanam swanubhavo brahmatmana samsthiti. So there विद्वत्वम शब्द की अर्थ है वैदिक शिक्षा की तात्पर्य समझाते हुए आचार्य ने ये विद्वत्वम शब्द की प्रयोग किए थे. पारिभाषिक जो अर्थ है, विदुषा के मतलब विद्वान, जो बहुत पढ़ाई किया है, एमए, बीए, पीएचडी, देन बहुत सारे ग्रंथ, वही विद्वान है. ये दुर्लभ है, इतना पढ़ना दुर्लभ है, क्योंकि सब लोग इतना पढ़ नहीं सकता. लेकिन आचार्य की कहना है सिर्फ इतना किताब पढ़ने से ही कोई बंधन से मुक्त नहीं हो सकता.
बंधन से मुक्त होने के लिए सिर्फ विचार 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 विचार, मैं हूं, ये मैं हूं या नहीं हूं, ये मेरे मामला है और नहीं, ये आत्मा है या अनात्मा है, ये कांस्टेंट विचार विल गिव मुक्ति टू ए बंधनग्रस्त व्यक्ति। ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर आप धर्म जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक भूमि में विचरण करना चाहते हैं, अगर आप खुद को विद्वान मानते हैं, तो ये अवश्य कर्तव्य है। धर्म की जगत में प्रवेश किए हुए जो शिष्य और स्टूडेंट है, इस गुण की आवश्यकता है कि विचार, मैं एक विचारशील व्यक्ति हूं या नहीं। ये पूछिए, whether I am a doctor or engineer or PhD holder or a well-read person, it doesn't matter. Am I a vicharshil व्यक्ति or not? Am I a discriminative personalities or not? ये सबसे जरूरी है। That's why साधन चतुष्टय की एकदम पहली धाप है विवेक। पहली स्टेप, the first step of sadhana chatushtaya is viveka. And what is the definition of viveka? Nitya anitya vastu viveka. What is nitya? What is anitya? What is eternal? What is perishable? वही बुद्धिमान है, वही अ, विद्वान है, विदुषी है, जिनके पास ये शक्ति है ये विचार करने की, ये जिसमें मैं डूब रहा हूं, जिस भावनाओं से मैं डूब रहा हूं, जिस व्यक्ति से, जिस विषय से, जिसमें ही, ये नित्य वस्तु या अनित्य वस्तु। ये मत पूछिए कि अनित्य वस्तु भी तो आपने शास्त्र ही तो बताया है, सर्वं खल्विदम ब्रह्म। गुड। ऐसे सवाल उठता है यार, हाँ अनित्य है, लेकिन अनित्य में अनित्य कैसे खड़ा रह सकता है? इसमें नित्य है तब ना अनित्य वस्तु खड़ा है, लेकिन मैं कैसे इसको ले रहा हूं? सो विचार पद्धति विल कम फ्रॉम 153। दैट इज वंडरफुल। मुञ्जादिशीकामिव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम्। मुञ्जादिशीकामिव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम्। विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम् तदात्मना तिष्ठति यस्य मुक्तः। विवेच्य तत्र
तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यस्य मुक्तः मुञ्जादिशीकामिव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम् विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यस्य मुक्तः। मुंजात, यू नो, जिनके घर में उपनयन होता है, तो ये हमारा जो उपनयन होता है उससे पहले एक विशेष प्रकार की घास से ये जनेऊ बनता है, पहले वो पहनना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड मुंज मेखला। जिनका पहले उपनयन संस्कार होता है, उस उपनयन संस्कार में पहले ही ये जो धागे का जो जनेऊ है वो नहीं पहनाए जाते, पहले मुंज मेखला होता है और उसी से ही ये जो कपड़ा वो मुंज मेखला से ही बांधता है, जो ब्रह्मचारी रूप में भाती होती है। तो मुंजात, उस मुंज तृण से ईशिकाम इव, ईशिकाम इव मतलब जैसे आप कुश जानते हैं, पूजा में यूज होता है कुश। ये कुश भी एक तरीका की घास है। तो उस कुश को कैसे निकालते हैं? न पहले उस घास को अलग करते 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 अंदर का जो डंडी है वो निकालते हैं। तो मुंजात इसी काम इव मतलब मुंज तृण से ये तृण की सारे आवरण को हटाकर, जैसे अंदर का डांटी और डंडी निकालते हैं, उसी प्रकार से एक ही प्रक्रिया में दृश्य वर्गात, ये जो पूरा के पूरा दृश्य जगत है, विजुअल वर्ल्ड, प्रत्यंचम असंगम अक्रियम आत्मानम विविच्य, ये पूरा के पूरा दृश्य जगत से दृष्टा स्वरूप निर्लिप्त, मतलब जिनके साथ किसी का संबंध नहीं, निष्क्रिय, एब्सोल्युटली इनएक्टिव आत्मा को विविच, विचार के द्वारा अलग करना पड़ेगा। क्योंकि इस माइक से आप कैसे अलग करके आत्मा को निकालेंगे? सूक्ष्म वस्तु निकालने के लिए सूक्ष्म व्यवस्था चाहिए, और उसी सूक्ष्म व्यवस्था को विचार कहते हैं। तत्र सर्वं प्रविलाप्य, पहले तो अलग कर दिया, ये दृश्य वस्तु में ही ये अनित्य वस्तु है, ये अनित्य है, ये अनित्य है।
तो ये कैसे रह रहा है, इसका अस्तित्व किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर है, नित्य वस्तु के ऊपर इस अनित्य की प्रलेप है। ये पहले विचार व्यवस्था, पहले विविच्य, ठीक है, विचार, उसके बाद प्रविलाप्य, तब ये विचार आएगा कि ये सारे के सारे वस्तु आत्मा ही है। तदात्मना तिष्ठति सह मुक्तः। जो ये कर सकता है, जो खुद ये करके सारे वस्तुओं की, सारे जगत की साक्षी के रूप में अवस्थान करते हैं, वही जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त का मतलब ये नहीं कि वो कोई मैजिक दिखा सकता है, हाथ में ऐसा किया तो हाथ से कुछ निकाल आया, किसी का कुछ डिजीज हुआ तो ये छू दिया तो डिजीज अच्छा हो, उसका भी जरूरत है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो दवाई से नहीं ठीक होता, तो लोग कोई आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे सलाह लेता है, और उनका पास कोई शक्ति रहता है जो स्पर्श करने से या कुछ पानी पिलाने से ठीक हो जाता है। लेकिन उसके साथ मुक्ति का कोई संबंध नहीं। हम लोग जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं, ये मुक्ति तो विचार से ही आएगा। और वो विचार क्या है? आत्मा अनात्मा विचार। और ये विचार में जो पक्का है, वो खुद को साक्षी के स्वरूप रखते हैं। और जो आदमी, जो व्यक्ति साक्षी के रूप में है पूरा जगत के बीच में, वही जीवन मुक्त है। भीड़ में तो भेड़ भी रहते हैं, लेकिन भीड़ में जो अकेला है वही साधु है, वही जीवन मुक्त है, वही महात्मा है। He who separates all sense objects, perceived, felt, and thought of from the subjective, unattached, actionless self, like the enveloping sheaths separated from the core of the munja grass, he is free. For having merged everything with it, he remains ever identified with it. So Gurudev has written, Munja is a type of grass which is nothing more than a stalk of leaves held together. Like the common plantain tree, these sheaths can be removed one by one until the central core is reached. Similarly, the Atma, which is actionless and unattached, can be taken out of the enveloping shades, but one must be very careful because the inner core is very tender and delicate. All that can be classified as seen, drishya, which is perceived, felt, and thought of, is other than the subject. So the whole drishya jagat is object.
And who is the subject? The seer of all seen world is the subject. So the object is always perceived, felt, and thought of. They are covering the Atma, which is like the core in the munja grass. Atma is the core of everything. The body, mind, intellect, and object, emotion, thought are the objects perceived which veil the self. Just as the soft, tender core of the munja grass can be reached and revealed by removing sheath after sheath, so too all the covering of the self can be removed, and the Atma, which is unattached and actionless, can be reached. This Atma, this Atma, which is always inside, reveling as the subject in every bosom, is not available for our cognition now, because we remain ever looking through the covering of the body, mind, and intellect. When this consciousness, the actionless, the state of objectless awareness, is realized, the entire perceptible phenomenal world merges into it. Just as on waking up, the dreamer and his dream world merge into the waker, he who thus reaches the self and merges with it is a liberated one. He has no more coming and going into this world of perceptions, world of perceptions, feelings, and thoughts as a doer, enjoyer ego, who recognize himself as Atma, the Atma which is unattached, untainted, pure, who has no connection with the world, and who recognize himself as this Atma, how he will be touched by the world? He or she is the Jivan Mukta. And our Shastra's main aim to make us realize that we all are actually Jivan Mukta. Each and every being are Jivan Mukta only. Not only Jivan Mukta, Mukta we are. But that we, if we understand while living, that is the state of Jivan Mukti. And that will come with the vichara. Vichara Shakti, how it will come? By constant Sravanam, Mananam, and Nididhyasam. How we will get rasam, interest in constant Sravan, Manan, Nididhyasam by the grace of Guru and God. That is why bhakti is verily essential in this path. Unless and until her grace, we don't get interest to listen to the holy discourses. महामाया की कृपा के सिवा सुनने का मन नहीं होता. So the culmination of bhakti and jnanam is verily required.
for this spiritual world. Hari Om Tat Sat. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Guru Pyo Namaha. Hari Om.